Bismillahirrahmanirrahim. I just sent a message on WhatsApp. Somebody asked some questions. So I start with reply to that query. First of them is about this integral dx upon e power x plus e power minus x squared. This we can write down as dx upon e power x plus 1 upon e power x squared. Take LCM in the denominator. E power 2x plus 1 divided by e power x whole square. And then it becomes e power 2x in the denominator. That brings up e power 2x dx upon e power 2x plus 1 whole square. There you can substitute t is equal to e power 2x plus 1. That gets you t is equal to 2 e power 2x dx, and this integral transforms into e power 2x dx is equal to t by 2 upon t square. It becomes power integral. The result is minus 1 upon t plus c. That makes it minus 1 upon t, and t was e power 2x plus 1 plus c. This was the first question that was asked, and मेरे पास जो क्वेरी आ रही है मैं सबसे पहले उनका जवाब दिया. So that was the first one. The second one I received as query was about the problem solving programs. So I'm considering all such queries for the first thing today. Here we can see that the derivative of sine is available here. So we substitute t is equal to sine x. There is can you hear me clearly? I have misplaced my headphone. Can you hear me clearly? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then I continue with what I was doing. थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब है आज हमारे यहाँ, इसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था. According to this, it is saying that recording is going on. आप लोग कितना चेक करते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही? So I was discussing a solution to this query कि भाई ये सवाल नहीं हो रहा. Somebody asked me to solve this question, so I'm doing that. That are all on the first exercise. So when we substitute t is equal to sine x, we get dt is equal to
cos x dx, and this integral becomes cos x dx की जगह dt, in the denominator sin x की जगह t, and t square plus 1. वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मेट आ गया है किसका, secant inverse का, but if you have still some problem, I can show you that whenever we have variable squared plus constant, the substitution has to be made. Rahim Farooq, are you trying to say something? Okay, I told you that this integral can directly be written as secant inverse t as our elementary formula, but to reach at this result, I was just trying to remind you that variable squared plus constant is there, so t is equal to secant theta is the substitution required. That makes dt is equal to secant theta tangent theta d theta, which makes the integral look like dt replaced by secant theta tangent theta divided by t is equal to secant theta. Okay, you people are putting your attendance in the comments. Okay, it's all right. No issue, keep doing that. Secant square theta plus 1. Now this secant cancels with this, and secant square plus 1 is tangent square. Under the root become tangent, and tangent cancels, and it is only integral dt. That means integral t plus c, and from here we see that the result is secant inverse t. But t is not the original variable of the question. Original variable of the question was x, and t was sin x. That means this should be written, the answer should be written as secant inverse of t, which is sin x plus c. Another question that was asked, as I understand it, जिसने लिखे हैं सवाल या मुझे भेजे हैं सवाल, राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम ऐसा है कि मुझे थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैं इसको 4 plus e power 2x कंसिडर करूंगा, and this means that the under the root you have the structure of what? Constant plus variable square, and wherever constant plus variable square appears, we think of the substitution a tangent theta. But before making it a tangent theta, we first write down y is equal to e power x. This means dy is equal to e power x dx, so that this integral becomes dy upon 4 can be written as 2 square plus e power 2x means y square. And now this is constant square plus variable square. If the substitution should be a tangent theta, that is 2 tangent theta. That makes dy is equal to 2 secant square theta d theta, and then this integral becomes 2 secant square theta d theta upon square root of 2 square plus y square, that is 2 square tangent square. From the numerator constant 2 comes out, और 2 square common निकालें तो एक constant denominator में आ गया, वही का वही secant square theta d theta upon under root 1 plus tangent square. 1 plus tangent square theta is secant square theta, under the root becomes secant
So this becomes this integral. So it is now simply integral of secant theta, elementary integral, whose result is ln of secant theta plus tangent theta, a format that we have come across many times. Now we had substituted tangent theta was taken for y by 2. तो tangent theta की जगह तो y by 2 रख देंगे. Secant theta जो है is square root of 1 plus tangent square. That means secant theta की जगह हम 1 plus y square upon 2 रखेंगे. So this result will be intermediate result square root of 1 plus y square upon 2 plus tangent theta, which is y upon 2, plus c, and y was e power x. This can be written as ln ये 2 square है. एलसीएम लेंगे, इसके नीचे भी 2 आ जाएगा अंडर रूट पार्ट्स निकल के, तो 2 थ्रू आउट कॉमन है, इन द डिनोमिनेटर एलसीएम 2 आएगा. So this can be written as square root of 4 plus y square, and y was e power x, so e power 2x plus y e power x divided by 2 log a upon b से minus log 2 इसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाएगा. Result will be this. These are some queries that I have addressed. One more I will address, or two more. One is, I think it is cos hyperbolic square 2 upon x. Now, for hyperbolic functions, I have introduced the basic formula for cos hyperbolic, which is e power x plus e power minus x upon 2. Now, if you are dealing with cos hyperbolic square 2 by x, that means you are dealing with e power 2 by x plus e power minus 2 by x divided by 2 whole square. And you can deal this with a plus b whole square 1 upon 4 अलग कर दीजिए. So e power 4 by x plus 2 times e power 2 by x to e power minus 2 by x plus e power minus 2 by x, 4 by x square root. These two terms cancel each other, and we are left with 1 upon 4 e power 4 by x plus e power minus 4 by x. So this cos hyperbolic square 2 by x can be written as 1 upon 2 integral e power 4 by x plus e power minus 4 by x. Now, how to handle this is still tricky, and we can do a few things with this. E power 4 by x plus 1 upon e power 4 by x, which after taking LCM becomes e power 8 by x plus 1 upon e power 4 by x, which can be written as e power 4 by x power 2 plus 1 upon e power 4 by x. I will leave this for your further investigation. And I hope you can do that. It is something like t square plus 1 upon t. Variable squared plus 1 upon variable.
एक सब्स्टिट्यूशन और करेंगे और ये सॉल्व. One last query that I consider for today's discussion as the first part of my lecture today. I will consider this problem dx on square root of 1 plus e power x plus e power 2x. And I see that it is something like e power x squared plus 2 into 1 upon 2 e power x plus 1. 1 can be written as 2 into 1 upon 2. And I see that to complete a square, I need a plus b whole square का जो formula है, उसमें a square plus 2a, so b is 1 by 2. जिसका स्क्वायर मुझे चाहिए वो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा. 1 by 4 is required, which can be taken out of 1. So 1 will remain, what will remain is 3 by 4. So what you have here is the integral of this part, e power x plus 1 whole square plus 3 by 4. So you have variable squared plus constant square. Whenever you have variable squared plus constant square, replace the variable by a tangent theta. So what is a? A is root 3 by 2. So root 3 by 2 tangent theta अगर मैं इसमें डालूं तो e power x dx. Oh, I have missed the e power x in the numerator, which is given in the question. So e power x dx becomes root 3 by 2 secant square theta, and this integral now looks like e power x dx is equal to root theta by 2 secant square theta d theta, and in the denominator we have what? In place of e power x plus 1 whole square is 3 by 4 tangent square theta plus 3 by 4, and from the numerator the constant root 3 by 2 comes out. From the denominator 3 by 4 taken common will be 1 upon root 3 by 2, and the integral is secant square theta d theta divided by what? Under the root 10 square theta plus 1, which is secant square theta. Under the root becomes secant theta, cancels with 1 power, this constant cancels, and you are again left with integral secant theta. And you know how to do this. We have just discussed a few minutes earlier. So these were a few questions. If you have some questions right now, you can WhatsApp me, or you can कोई क्वेश्चन लिखा है कागज पे लिख के व्हाट्सएप कर दो. अब मैंने अटेंडेंस, आई एम नॉट कॉलिंग अटेंडेंस, सब लोगों ने अपना जो है वो कमेंट्स में अटेंडेंस लगाई हुई है. सो आई एम नो नीड टू सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स. कितनी फिक्र है अटेंडेंस की, कितना टाइम, और जितने मैसेजेस करते हो तुम लोग उतना टाइम अगर तुम एक्सरसाइज में लगाओ तो तुम्हारी परेशानियां आज ही रह जाए.
अच्छा भाई, जो सवाल पूछे गए थे मैंने उनके जवाब दिए। And I'm going back to my discussion on partial fractions. जो लोग अटेंडेंस लगा, यस सब अटेंडेंस के लिए कर रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं कमेंट्स में, इट्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम विद मी। हियर इज अ क्वेश्चन। As I understand, मुझे अभी व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन रिसीव हुआ है, मैं ये समझ रहा हूँ कि वो क्वेश्चन ये है, एक्स क्यूब ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आई गो ऑन। ओके, दैट्स गुड, सही समझा मैंने। सो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो ये फंक्शन है ई पावर एक्स स्क्वायर। इसको हम जितना मर्जी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करें। अच्छा, एक्स के ऊपर स्क्वायर है, सॉरी, ई पावर एक्स का होल स्क्वायर नहीं, बल्कि ई की पावर जो एक्स है that is squared, so it should be considered like this. So what I do, that I take t is equal to x square. That makes dt look like 2x dx. Now do I have this 2x dx? No, but x dx I do have available in this question, dt by 2, but I have to rewrite this question like this: x square e power x square, and then x cube में से x square लिखा है, बाकी रह गया x dx. So this integral then becomes x square की जगह t e power t x dx की जगह dt by 2. So 1 upon 2, the rest of the integral is a simple by parts case, and I write that solution a bit quickly. T integral e power t is e power t minus derivative of t is 1, e power t का integral e power t, and the solution finally is t e power t minus e power t plus c. But what is t? T is x square, so we have to go back to the original variable. So x square e power x square minus e power x square plus c, that completes the solution. So if you have any further query, you can send, or I go to I have discussed partial fraction last evening, but you मेरे attendance बहुत कम थी, and my data from YouTube tells me that last night's lecture has been seen by only 8 students, or day before yesterday was seen by 48 students. So आप लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें बहुत टाइम लगेगा लेक्चर से देखने के लिए, मगर जाहिर है कि मैंने जो टाइम यूज किया था उसको मैं कवर करने की कोशिश की मैंने, और आप लेक्चर रिकॉर्ड करके आप छोड़ दिए, एंड आई होप नाउ अंडर व्हाट कंडीशंस पार्शियल फ्रैक्शंस, मैंने ये फाइल शेयर कर दी है, इसमें से क्या करना है और क्या नहीं करना, आई विल गाइड यू थ्रू दिस. Partial fractions are used in what situation? What are the circumstances in which partial fraction is a must?
And also the question that partial fraction किस condition में हमें कर लेने चाहिए. There can be situations where we can work out without partial fractions, but there are situations when we cannot avoid partial. सबसे पहली बात तो ये कि partial fraction हम rational functions के integrals निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनॉमियल है और डिनोमिनेटर में भी. So we're not talking about irrational functions, we're talking about rational functions. So the whole process basically depends on कि जो न्यूमरेटर का पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री कितनी है और डिनोमिनेटर का जो पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री. फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर का पॉलिनॉमियल 4 डिग्री हो सकता है और डिनोमिनेटर का 6 डिग्री हो सकता है. लेकिन अगर न्यूमरेटर का जो पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर के पॉलिनॉमियल की डिग्री कम है, तो मुझे बॉक्स डिवीजन करके इस Pnx अपॉन Qmx को इस फॉर्म में लाना होगा. डिवाइडेड पार्ट रिमाइंडर अपॉन द कोशेंट डिवाइडेड. So we can obtain this by box division of the numerator polynomial by denominator polynomial. Sx is the quotient and Rx is the remainder, such that the degree of the remainder, यानी ये हमें box division कब तक करना है जब तक remainder less than m नहीं होता. So I go to demonstration of this equation. This is a situation x cube plus 1 upon x square minus 1. So numerator's degree is more than the denominator. So we go to box division. X cube को divide कर रहे हैं x square minus 1. I hope you know this box division. And one step, जब x को x square minus 1 से multiply करें तो x cube minus x आएगा. x cube plus 1 में से x cube minus x को subtract करेंगे तो बाकी x plus 1 बचेगा. Now this is the remainder and its degree is now less than the degree of the denominator. So this sorry, it dropped again. I'm back. So this rational function, जिसमें numerator third degree polynomial था, denominator second degree polynomial था. After this box division, x plus remainder upon divided, and this is the part where numerator's degree is less than the denominator's degree. और इस part पर हम partial fraction इस्तेमाल करेंगे. इसका integral तो if your problem is to integrate this, then you know that x integral is simple. It is the integral of this part which require partial fraction. Now there are different cases for partial fraction. I'll discuss only two cases. And out of those two cases, we'll consider some simple problems. And sometimes partial fraction, very simple looking problems become very complicated. So I will avoid involving exercise या practice कर रहे हैं तब तो इंसान challenge कर रहा होता है तो हर सवाल solve करने की कोशिश करता है. But as I said last night, भैया 75 मिनट का इम्तिहान लेना है मैंने. सैंपल क्वेश्चन जो तुम्हें भेजे हैं वो 3 घंटे के हैं. तो सैंपल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पेपर छोड़िए. Okay, so I will be making a paper which if a person knows everything can do it in 60 minutes. और 15 मिनट एक्स्ट्रा उन लोगों के लिए जो गलत करेंगे फिर सोचेंगे फिर सही करेंगे या कुछ याद करने की कोशिश करेंगे. एक चीज और मैंने अभी रिसेंटली व्हाट्सएप पे शेयर की कि
you may not require a formula sheet. Questions will be so designed that you may not require a formula sheet. And if some formula sheet is still required, यार ये डिस्कनेक्ट होने की वजह से अटेंडेंस थी वो मिस हो चुकी है और I'm not bothered about क्योंकि मेरा अपना जो है वो इंटरनेट कनेक्शन वो खराब है. बैक टू पार्शियल फ्रैक्शंस. अच्छा साहब, हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं और किस मकसद करने हैं कि हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी. पोलिनोमियल डिवाइड बाय पोलिनोमियल जिसमें न्यूमरेटर का पोलिनोमियल जो है उसकी डिग्री स्मॉलर है और डिनोमिनेटर की डिग्री लार्जर. Now we can make partial fractions if the denominator can be factorized. The first case, factorized into what? How much time did you miss seeing what I'm discussing? Hello, can you hear me? Yes, sir. कितना टाइम ऐसा हुआ है कि मैं डिस्कनेक्टेड रहा हूँ और आप ये जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ये नहीं देख सके? Sir, 4 to 5 minutes. हाँ दौलत? 4 to 5 minutes, sir. 5 seconds, not more than that. I hope you haven't missed too much. हम कह रहे हैं कि partial fraction हम उस सूरत में करेंगे जब numerator polynomial has a smaller degree and denominator polynomial has a larger degree or denominator can be factorized. जो factorized denominator है उसका पहला केस ये है कि जितने भी factors मैं factorize करता हूँ denominator को और denominator has all factors linear. इसका मतलब है denominator is the product of only linear factors. If this be the case, then Pnx upon Qmx can be written as one constant upon first linear factor, another constant upon second linear factor, another constant upon third, and so on and so forth. So, for example, we have a 2x square upon 3 upon ये cubic polynomial है जिसके partially जो factors हैं मैंने लिख दिए हैं. x square minus 1 को further factorize करें तो now we see that the denominator, which is a third degree polynomial, is factorized into linear factors. Every factor is linear. In that case, we can write a upon first linear factor plus b upon second linear factor, then c upon third linear factors. If somehow I can find out the constants a, b, c, then the integration of these function is very simple, very trivial rather. The second case is that when you factorize the denominator, one of the linear factor is repeated. That means some linear factor x minus constant raised to power 3 आ गया, for example. So इसके partial fraction लिखने का तरीका constant upon the linear factor, another constant upon linear factor raised to power 2, another factor, another constant divided by linear factor raised to power 3. अगर ये raised to power 5 तक है तो इस तरह की term raised to power 5 तक लिखी जाए. So what I mean is x plus 1 upon x minus 1 raised to power 3. So factorized तो है ये denominator. और factor भी linear है, but that is repeated 3 times. In that case,
x plus 1 upon x minus 1 whole cube will be written as a upon x minus 1 plus b upon x minus 1 whole square plus c upon x minus 1 whole cube. If this was power 4, ये एक और term आती plus d upon x minus 1 is power 4. So this is a variation in case 1 that I have written as case 2. A linear factor has power r. So we will have r such terms जिसमें पहली टर्म में लीनियर फैक्टर पावर 1 होगा, दूसरी टर्म में लीनियर फैक्टर पावर 2 होगा एंड सो ऑन. Third case, we factorize the denominator and one of the factor is quadratic. So linear factor के लिए तो हम टर्म लिखते हैं या a constant upon linear factor plus constant upon another linear factor. और अगर linear factor repeated है तो constant upon linear factor plus constant upon linear factor squared. जितनी दफा repeated है उतनी टर्म ऐसे आएंगी. लेकिन if there is a quadratic factor, तो corresponding to that हम जो टर्म लिखेंगे partial fraction की फॉर्म के लिए वो सेकेंड डिग्री अगर डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल लिखेंगे जिसमें a और b कांस्टेंट्स हैं that are required to be solved. और अगर quadratic factor रिपीट हो रहा है तो एक टर्म ऐसी प्लस अनदर टर्म ऐसी विद डिनोमिनेटर स्क्वायर्ड, फिर अनदर टर्म ऐसी कैसी ax plus b, a1x plus b1, a2x plus b2 plus a3x plus b3 divided by quadratic factor raised to power 3. For example, now if I have got x square plus 1 repeated, so we corresponding to that I'll be writing down a linear factor divided by x square plus 1 power 1 plus cx plus d, another linear factor divided by x square plus 1 raised to power 2. जितनी पावर यहाँ पे आ रही है उतनी टर्म्स यहाँ पे आएंगी. Okay, I'll come back to this later. So this is the basic principle. Now, if the quadratic factor is repeated, we will have this situation, and then we move on to exercise 7.1. I have shared this page, the resources, but I'm not discussing the solution because whatever is discussed here, specific चीज अहम है जो मैं डिस्कस कर दूं. फॉर एग्जांपल ये जो सॉल्यूशन किया हुआ है इस तरह की सॉल्यूशन अभी हम एक्सरसाइज में करेंगे, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस सॉल्यूशन. ये भी हम एक्सरसाइज में करेंगे. हाँ, ये केस है अ सिंगल क्वाड्रेटिक फैक्टर. The question asked is कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो तो हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं. मैं एम्फसाइज करना भूल गया. When the degree of the numerator is greater than the denominator and when the degree of the numerator is equal to the degree of denominator, in both cases box division करके हमें वो फ्रैक्शन हासिल करना है जिसमें न्यूमरेटर has a smaller degree than the denominator. Okay. I was discussing this question जिसमें एक quadratic factor है और कुछ भी नहीं. Now in this quadratic factor, theory says that मुझे ax plus p upon x square plus x plus 1 करना है. अगर मैं ये करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं होता. a0 आ जाता है, b1 आ जाता है, यानी ओरिजिनल चीज वापस आ जाती है. इसका मतलब है क्वाड्रेटिक फैक्टर किसी भी क्वेश्चन में इंडिपेंडेंटली आ जाए तो मैं इसको सॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं करूँगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो मैं पहले हासिल कर चुका tan इनवर्स की फॉर्म में.
or even if I have got x square plus x plus 1, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस तरह का एक सवाल किया है जिसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर कंप्लीट करके फिर इसको tan इनवर्स फॉर्म में ले गए. सो अगर सिंगल क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है एक रैशनल फंक्शन में, तो वी हैव अदर मेथड्स. Okay, coming back to exercise 7.5. So here I start considering obtain partial fractions of this. Now x square minus 4 can be factorized. So the linear factors are x into x minus 2 into x plus 2. And for each of the linear factor, I have to write down a term of this type, a upon x plus b upon x plus 2 plus c upon x minus 2. So we need to find out the constant a, b, c in order to integrate this. Integrate करना है इसको, पहले partial fractions बनाएंगे, a, b, c मालूम करेंगे, a, b, c मालूम करने के बाद, when this function becomes like this, integration is very simple. So how do we get the constant value a, b, c? इसका तरीका ये है कि जब हम ये लिख लें, as per suggestion of the theory, जो डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड पे इससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं. When x into x minus 2 into x plus 2 is multiplied on the left hand side, only 1 is there. When these three factors are multiplied with this term, x will cancel out and a multiplied by x plus 2 or x minus 2. When you will multiply by this, multiply second term with this triplet, then x plus 2 will be cancelled out, or b के साथ x into x minus 2. When you go to multiply this triplet with this third term, x minus 2 cancel हो जाएगा, or c times x into x plus 2. So that now this is a situation that helps us in finding the values of a, b, c by choosing suitable values of x. For example, अगर मैं x 0 ले लेता हूँ, तो ये term खत्म हो जाएगी, ये term खत्म हो जाएगी. So substitute x is equal to 0, and this will give me 0 plus 2, 0 minus 2 becomes minus 4a. So 1 is equal to minus 4a, and a is equal to minus 1 by 4. इसी तरह अगर b की वैल्यू -2 ले लूं, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये टर्म खत्म हो जाएगी, b वाली टर्म बचेगी. And b की टर्म में x equal to -2 here, -2 and -2 becomes +8. So 1 is equal to 8b. So b is equal to 1 upon 8. And finally, if I choose x is equal to 2, so this term will be vanished. This term will become 0. And here, 2 into 2 plus 2, which is 8. So 1 is equal to 8c, and c has value 1 upon 8. And we get a upon x, yani minus 1 by 4 upon x, 1 by 8 upon x plus 2, 1 by 8 upon x minus 2. And its integration is very simple integration, integral of 1 upon x, integral of x plus 2, integral of x minus 2, which are all log functions. Log x plus 2, log x minus 2, dx upon x is log x, dx upon x plus any constant, plus or minus constant, is ln of x plus minus whatever was there. Now that completes the integration of this function whose partial fractions we have required. हमने इसकी integration भी कर दी. Now this is a question where we have degree of numerator 2, degree of denominator. यार सबको अटेंडेंस देगी मैंने. कनेक्शन कैंपस में भी गड़बड़ हो रहा है, कनेक्शन शहर में भी गड़बड़ हो रहा है, मेरे पास भी कनेक्शन गड़बड़ हो रहा है. So don't bother about. I'm recording the lecture. Let me make sure it's been recorded.
Yes, it's been recorded. So जितना आप लाइव अटेंड कर सकते हैं लाइव अटेंड करें, बाकी मजबूरी है। और जिस तरह से आप लोगों ने कल रात अपने जज्बात का इजहार किया है, आज मैं संजीदगी से सोच रहा हूँ कि आपको देखता हूँ, या तो मैं फिजिकली क्लास लेने आऊँगा या मैं नहीं। Coming back to this, numerator has degree 2, denominator has degree 3, but linear factor repeated 3 times. So x square upon x plus 2 whole cube के partial fractions होंगे constant upon x plus 2 यानी linear factor की एक power, constant upon linear factor की 2 power, constant upon linear factor की 3 power, 3 ही तक थी, अगर 4 होती तो constant upon linear factor power 4. Once we have written what is required by the theory for this repeated linear factor in the denominator, we multiply throughout by x plus 2. So x plus 2 whole cube. So then left side पे x square रह जाएगा, right side पे जब इसको x plus 2 whole cube से multiply करोगे तो x plus 2 whole square बचेगा, एक x plus 2 पड़ेगा. When you multiply this term with x plus 2 whole cube, 2 powers कट जाएंगी और 1 power बचेगा. When you multiply this term with x plus 2 raised to power 3, so only c will be left. Now, in this case, what we do is simplify what we have on the right hand side as much as possible. Collect the terms of same power. X square की एक ही term है, x की 2 terms हैं, 4ax from here and bx from here. Then there are 3 constant terms, one coming from here, 4a, one coming from here, 2b, and one coming from here. So we have 3 terms of constant. On the left-hand side, we have only x squared. A process comparing coefficients, I hope you are familiar with that. Left side पे x square का coefficient 1, right side पे a, so a should be 1. Left side पे there is no term of x, right side पे x का coefficient 4a plus b. So क्योंकि left side पे x की term है ही नहीं, तो 4a plus b should be 0. A has been obtained as 1, so 1 यहाँ substitute किया जिसकी वजह से b की value -4. Now we have value of a, value of b, and we need value of c. So the third equation, the constant. We don't have a constant on the left hand side, so the constant on the right hand side, जो भी आ रहा है, that should be 0. जी मैंने कॉल की थी बुकिंग के लिए, लेकिन वो मेरे दोस्त ने बुक कर लिया, जिया ने बुक कर लिया ना, आज 8 बजे 8 वॉलीबॉल के लिए. ठीक है, ओके, हाँ उसी के लिए कॉल कर. I hope your conversation is over. We have obtained a value 1, so a की जगह 1. B value is -4, that makes -8, and that gives you the value of c to be 4. And this fraction function converted to partial fractions can now be integrated. Integral of 1 upon x plus 2 is simple log x plus 2. -4 separated. The rest of it is 1 upon x plus 2 whole square power integral की वजह से ये माइनस हो जाएगा. तो -4 नो माइनस कैसे हो जाएगा? -4 तो पहले से था. Integration of 1 upon x plus 2 whole square, when you integrate, dx upon x plus 2 whole square. So power -2 है और x plus 2 का डेरिवेटिव 1 यहाँ पे है, तो पावर इंटीग्रल है, so it becomes minus of 1 upon x plus 2. The third one is also a power integral, 4 as it is, and
this will be minus 1 upon 2 times x plus 4 whole square. So minus 1 upon 2 into 4 cancel हो जाएगा. So this is definitely going to be minus. So this is going to be 2. So the integration completes. Next, I consider the case which is a bit more complicated. It requires lots of calculations. I have demonstrated the calculations. The principle I will discuss. The details will not. Numerator is 4-degree polynomial. The polynomial of the denominator is 1 degree यहाँ से और x square plus 1 raised to 2. 4 degree यहाँ से. Total 5 degree. 5 degree. So we can directly write down. For a linear factor, a term of the type a upon x minus 2. For quadratic repeated factor, one term dx plus c upon x square plus 1. The other term dx plus e upon x square plus 1 whole square. The rule is कि जो denominator है उससे throughout multiply करेंगे. So when we do that, a के साथ x square plus 1 whole square आ जाएगा. dx plus c के साथ x minus 2 आएगा और x square plus 1 की एक पावर आएगी. dx plus e के साथ पूरा x square plus 1 whole square cancel हो जाएगा and x minus 2. Then the principle is that collect powers of terms of same power. So x power 4 has this coefficient, x power 3 has coefficient c minus 2b. After doing all that algebra, x square has this coefficient, x has this coefficient, and the constant term is this. Comparing coefficients, and we have a plus b is equal to minus 3, c minus 2b, क्योंकि x नहीं है, is equal to 0, x square भी नहीं है, तो 2a plus b plus d minus 2c is 0, e minus 2b plus c minus 2d, x left पे नहीं है, लिहाजा ये भी 0. Constant is there on the left hand side 1, so this constant should be equal to 1. अब ये मैंने इन सबको बहुत ही मगजमारी से सॉल्व करके this I was telling that some very simple looking fractions can produce very complicated numerical calculation. कि आपके पास कितने सारे constants में equation है, कितने constants? Look at here, a, b, c, d, e. आमतौर पे 3 कांस्टेंट तक जो है वो हम अगर हमारे पास 3 अननोन्स आ जाते हैं तो उनकी 3 इक्वेशंस से हम सॉल्व कर लेते हैं. 4 में भी काम चल जाता है, but 5 and it is very complicated. I have described 2 major cases. One where only linear factors are there. The other, there are quadratic factor, repeated quadratic factor. I won't be considering for final exam because repeated quadratic factor like this. There you have the repeated quadratic factor in the denominator. That makes things very complicated. It takes a lot of time. Here, there is a set of part of the exercises where factors are not given and you have to factorize yourself. Now, factorization of second degree polynomial, if you have experience of factorization, for example, here, what do? Take the constant of square term and the coefficient of square term and the constant. The product is 9, minus 9. So, अब जो
फैक्टर थ्योरम कहो, रिमाइंडर थ्योरम कहो, जो भी कहो, +-1 आ सकता है रूट, +-2 आ सकता है, +-3 आ सकता है. Whether you use this system or not, or if you have good experience, how can -8 be made out of -9? We can make it out -9 +1. So product of -9 + 1 is -9, and sum of -9 + 1 is 8, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फैक्टर्स जो हैं वो breaking -8x into -9x + x. Then first two terms 3x is common. The second two terms 1 is common. X - 3 is common to the two terms, so x - 3, and factorization is completed. So ये जो grade class 8 की factorization है, कम से कम ये जो है that you should be able to do. Now the partial fraction of this is required where only linear factors are involved. So constant upon one linear factor, another constant upon the second linear factor added together. Denominator multiply kiya throughout, and we get on the left hand side 5x - 1, on the right side a into 3x + 1 and b into x - 3. X is equal to 3 रख के a की वैल्यू निकल आई. X is equal to -1/3 रख के ये 0 हो जाएगा, so value of b निकल आई. So this question of integration turns into this question of integration, जिसमें ये इंटीग्रल डायरेक्टली log x + 3 है, मगर 3x + 1 तो 3 को कॉमन निकाल लो, या किसी और तरीके से. किस तरीके से भाई? What page was there apart from the constant? Constant को मैं भूल जाता हूँ. मुझे 3x + 1. चलो constant को भी रखो. Now, by now you should be familiar with the idea that 3x का derivative 3 है, जो कि यहाँ होना चाहिए इससे. Then denominator का derivative ऊपर है, so that goes into 2/3 ln of 3x + 1. ये 2/9 को लिखा हुआ. And one example I am considering here, where question number 18, the denominator and the numerator has same degree. That's someone asked. So यहाँ भी हम box division करेंगे, यानी numerator x² को divide करेंगे denominator x² - 3x + 2 से. It goes one time, so 1 into x² - 3x + 2 comes here. The subtraction cancel x², and this becomes 3x - 2 as the remainder. So x² upon x² - 3x + 2 is equal to 1 plus 3 remainder divided by the divisor. And ये है वो हिस्सा जिस पर हम partial fraction लगाएंगे, क्योंकि integral 1 integral dx. So for this part, both factors are linear. x² - 3x + 2 is a very simple quadratic expression. These factors x - 1, x - 2 है. You can find them easily, and then partial fraction done, values of a and b found, and the integration completed. Now ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे लीनियर फैक्टर जो है वो 3 times रिपीट हो रहा है. तो लीनियर फैक्टर्स चूंकि न्यूमरेटर आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ओनली 3 कांस्टेंट्स आर इन्वॉल्व. तो दिस, सो मैं जो आप को टेस्ट करूंगा पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए, वो क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर होगा तो उसमें 5 अननोन्स नहीं आएंगे, कम आएंगे, यानी रिपीटेड नहीं होगा. Otherwise, linear factors can be repeated,
और यहाँ तो हर तरह का सवाल मैंने किया हुआ है, जैसे यहाँ पे हाँ, यहाँ 2 कोऑर्डिनेट फैक्टर्स, इसमें 4 कॉन्स्टेंट्स आएंगे. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रिलेटिवली इजी बट a bit lengthy. There can be questions put up in the form of different either trigonometric function or exponential functions. तो आपको पहले algebraic function बनाना है, sin थीटा को सब्स्टिट्यूट करके आप ये काम कर सकते हैं और बार बार कर रहे हैं, और फिर इसके फैक्टर्स बनाने हैं t+5 और t-1 और फिर इसकी इंटीग्रेशन. So that's all I wanted to talk about partial fractions. Now, at the end, somewhere is written must do questions. Linear factors, repeated linear factors, quadratic factors, but not repeated quadratic factors. तो इसमें आपके पास आएंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सिर्फ ये 3 टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं. So that's it for partial fraction. And मैंने जब लोगों को सैंपल क्वेश्चंस दिए तो तुम लोगों में जो सनसनी फैली वो कोई गैर मामूली नहीं थी. जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जिन लोगों ने फिजिकली पढ़ा है उनको ज़्यादा समझ में आया होगा, जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ा. भाई प्रॉब्लम हमारे दरमियान जो हुआ है, that was the second week of the semester when I was really sick and I could not take a single class. और फिर मुझे मजबूर होना पड़ा कि मैं जो मुझे फर्स्ट आर डिग्री कवर करना था उसके लिए मैं सैटरडे संडे फ्राइडे को भी एक मैंने रिकॉर्डिंग की हो सकता हूँ. सर असल में इशू ये है ना कि आप जो है बहुत आराम से हमारी क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा हमारे साथ करते हैं, लेकिन प्रीवियस टीचर जिसके साथ हमने पढ़ा उनने बहुत कैलकुलन जल्दी में पढ़ाई थी. लाइक इतने सारे टॉपिक्स बिल्कुल 1-2 हफ्ते में इस तरह जल्दी जल्दी करा देते थे, वो भी स्लाइड्स पे दिखा के. तो इसलिए हमारी जरा बेस वीक है, लेकिन आपने इस दफा हमारे साथ थोड़ा पीछे से किया तो बेस भी हमारी अब बेहतर हो गई है. बेटा मैं तो बेस के लिए और ज़्यादा टाइम लगाना चाहता था, और मैं अभी अपार्ट फ्रॉम टीचिंग दीज कोर्सेज मैं कुछ और काम करने वाला हूँ. काम मैं ये करने वाला हूँ कि फॉर एग्जांपल एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स मैं तैयार कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, फ्रॉम वेरी एलिमेंट्री टू the most complicated form. क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हैं वो इतने एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होते हैं हर जगह कैलकुलस में कि मेरा वो स्टूडेंट जो 2 साल ओ लेवल के और 2 साल ए लेवल या 1 साल या इंटर के मैट्रिक का 1 साल और इंटर के 2 साल, वो मैथमेटिक्स उसने पढ़ी नहीं, यहाँ पे आज कॉलेज अलजेब्रा के नाम पे जरा सा उसको पढ़ा दिया गया. तो मैं लेक्चर सीरीज तैयार कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री पे, और उसके अलावा और भी इरादा है. तो मैं अपने चैनल पे दोज हु हैव सब्सक्राइब माय चैनल, वो मैं टिपिकली जाहिर है कि ये सब कुछ नहीं कहता कि ये सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिसको ज़रूरत होगी वो देखेगा. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं स्टार्ट करूँगा लेक्चर सीरीज रिकॉर्ड करना और अपलोड करना. Now I want to switch over to numerical integration, which is one of the easiest topics. And a page for them. Let me search for some empty pages.
Yes, I have here some pages. ये मैं पहले शेयर कर चुका हूँ. I will re-share this with the addition of numerical integration. Now, first of all, I'll remind you that what we have been doing up to now. What we have been taught up to now in this semester. Most of the people would be thinking the integration पढ़ाई जाए. No. मैंने थोड़ा सा derivative revise किया था. And in reflection of derivative, antiderivative was introduced. And then that was called integral. And we have been considering techniques of integration. This chapter 7 is all about techniques of integration. But what is integration? This question has not been addressed. How many times? भैया क्लास में मेरा गेस्ट कौन आ गया? अच्छा क्या चीज? ये किस सिलसिले में इंटरव्यू? शाहिद कुरैशी, वो जो वाइस चांसलर हो गए उर्दू यूनिवर्सिटी में. भैया सिस्टर मैं बताया भी उन्हें कि मैं क्लास में हूँ और मैं वो नहीं हूँ जिसको आपने इंटरव्यू किया. अरे भाई ये आईबी मेन से जब फोन आता है तो पता नहीं कैसे वो क्लास में आ जाता है, तब कोई डॉक्यूमेंट लेके डिस्टर्बेंस हो जाती. तो मैं ये कह रहा था कि हमने अभी तक ये बात डिस्कस नहीं की कि इंटीग्रेशन है क्या. आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि ये सारा काम जो था ये टेक्निकली इंडेफिनेट इंटीग्रल है. और कहीं कहीं यानी whenever you have this situation, this is indefinite integral, and then you have some time integral a to b fx dx, and then you call it definite integral. And you mostly consider this as area under the curve. If this is the graph of some function from x is equal to a to x is equal to b, then you talk about that this is area under this curve, and you say that area of region enclosed between एक चीज है x एक्सिस, this one, एक चीज है वर्टिकल लाइन x is equal to a, this one, एक चीज है वर्टिकल लाइन x is equal to b, this one. And the other thing is graph of y is equal to f, क्योंकि ये
Every point on this has coordinates x, fx, which is the graph, and we say that graph of y. What is integration? इसका आंसर जो है वो हमें यहाँ से. When we look into this, the details of this geometry, in fact, give us the base of concept of integration. Derivative is generally a point phenomenon, but integral is not. यानी हम किसी एक point पर derivative निकालते हैं. हमने derivative निकालने के लिए जो dy by dx इस्तेमाल किया. For example, अगर मुझे tangent का derivative निकालना है, मैं u upon v लगाता हूँ. टेक्निक है, उसके जरिए मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ. तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन that comes out to be a function. But at times मेरे पास होता है कि 3x square plus 2x minus 1 का डेरिवेटिव निकालो at x is equal to 3. Then I take the derivative 6x plus 2 and then replace x by 3, and then the result is 20. So this is the derivative. Now what the derivative means, and you study in the first part of the calculus that it is a slope of the tangent. Slope of the line tangent to the curve. So अगर curve जो है वो इस तरह का है, तो derivative value इस tangent line क्या slope है. Now, understanding what is integration, we study numerical integration that leads to the fundamental ideas. Basically, CAL1 में एक चीज पढ़ाई जाती है, कम से कम मैं तो जरूर पढ़ाता हूँ, चाहे ऑडियंस कोई भी है, जब भी इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करता हूँ तो रीमान सम जरूर पढ़ाता हूँ. What is Riemann sum? मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, मोटी मोटी बातें आपको सिखाऊंगा. मेरे पास एक फंक्शन है f(x), इस पर मैं कोई भी कंडीशन नहीं लगा. देखिए, डेरिवेटिव निकालते वक्त हमने कंडीशन लगाई हुई है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो डेरिवेटिव आएगा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डेरिवेटिव नहीं आएगा. यहाँ पे हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, सिवाय इसके कि फंक्शन की वैल्यूज जो हैं ये फाइनाइट. At times we do go for functions that can attain infinite values, but generally हम कहते हैं कि ये फंक्शन की वैल्यूज हैं फाइनाइट. Now, how do I begin trying to get what we have stated here? Area of the region enclosed between x is equal to a, x is equal to b, and the graph. To start with, we have an estimate. This is x is equal to a. This point has coordinates a, f, a. मैंने ग्राफ फंक्शन का कंटिन्यूअस किया हुआ है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस. दिस इज x is equal to b. So b, f, b. Now this is the height of the graph here. This is the height of the graph here. Somewhere in the middle, there will be an average value of the function. That I can write down as fa plus fb divided by 2.
That is the average height of the graph. Now, I consider the height of the graph, average height of the graph, and I multiply it with the width of the interval over which I'm considering indefinite integral. I am exploring integral a to b of fx dx, and this is my first attempt at an estimate of this number. So ये तो आ गई average height of the graph, और अगर मैं इस width of the graph से width of the interval से multiply कर दूं, so what I get is average of area under the curve. In what sense? कि मैंने ग्राफ की जो हाइट्स हैं उसमें से मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट का एवरेज लेकर width of the interval से मल्टीप्लाई कर दिया. इसका मतलब I have taken the area of this box और उसको मैं कह रहा हूँ average area under the curve. Now I want to improve upon this. Estimate. अच्छा, क्यों मुझे improvement चाहिए? I take x square from 0 to 1 dx. I get x cube upon 3, 0 to 1, 1 upon 3 is the value. अच्छा जी, जो x square है, जीरो जीरो से शुरू होके 1 1 पे खत्म होता है. 1 plus 0 divided by 2. ये तो एवरेज हाइट हो गई. Width of the interval 1 minus 0. So that gives me 1 by 2. The 1 by 2 is nowhere near the actual area under the curve जो कि मुझे integration से हासिल, definite integral से हासिल. So I want to improve upon this estimate. To improve upon this estimate, I divide the interval of integration into two parts. I say that this is x naught is equal to a, and there is a middle number x1, and then x2 is b. And now I've got two intervals, one with the width x minus x1 minus x naught, the other one with width x2 minus x. अब अगर मैं एस्टिमेट लूं, जैसे ये रेक्टेंगल बनाया था, एवरेज लेके, एवरेज के बजाय इस इंटरवल में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है फंक्शन की, यानी एफ ए को मल्टीप्लाई कर दूं x1 माइनस ए और fx1 को मल्टीप्लाई कर दूं b minus x1, b minus x1. So I have this area. Now, while doing so, I have skipped some of the area under the curve. I have not considered this one. I have not considered this one. Can I consider more of this area? Yes, of course. I have the midpoint. I further consider midpoints. Divide the area under the curve and make the lower rectangles. यानी हर इंटरवल में फंक्शन की जो लोएस्ट वैल्यू है उसका रेक्टेंगल बना दीजिए. Now the leftover region, in comparison to first graph,
फर्स्ट एग्जाम्पल में लेफ्ट ओवर रीजन बहुत ज्यादा था, अब कम हो गया। इसका मतलब है जो एरिया अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ रेक्टेंगल्स का बढ़ गया है, यानी इन 4 रेक्टेंगल्स का एरिया जो है वो इन 2 रेक्टेंगल्स के एरिया से ज्यादा है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। With this comment, I stop discussion today and hope that we will have a complete discussion day after tomorrow. And I'm planning to have a revision lecture on Friday. We have a exam on Saturday. That is बड़ी गड़बड़ हो गई हम लोगों के साथ कि हमारी क्लासेस जो हैं जुमेरात तक हैं ऑफिशियली और एग्जाम हफ्ते को है। You have very short time. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के 2-3 फॉर्मूले डिस्कस करूंगा एंड दैट्स इट। मैंने अभी जो बात की न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बेसिक्स की बात की कि कैसे हम इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट जो है वो किन फुटिंग्स पे खड़ा करें। थोड़ी सी और डिटेल्स जाऊंगा, उसके बाद 2-3 फॉर्मूले डिस्कस करके एंड वी विल फाइंड दैट integration, numerical integration is much simpler than many other problems of this type. For example, मैं आपको एक खौफनाक प्रॉब्लम दिखाता हूँ। Integral sin inverse x raised to power 3 dx from x is equal to 0 to 1. हमने जितनी टेक्निक्स पढ़ी हैं आप उनमें से किसी से भी ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, लग पता चलेगा। Some of such integrals can be first written down as antiderivative and then limits substituted and you can get the exact result. But there are some which cannot be integrated and still in practical example in practical situations in physics as well as in statistics and many other application areas, और तो with time application areas बढ़ते चले जा रहे हैं। So numerical integration is savior for many of the application areas. So मैं numerical integration बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ। Very simple and it's just use of few computations and you देखो रहीमा या राहिमा whoever you are asking for formula sheet, मैंने भी थोड़ी देर पहले कमेंट किया था कि पेपर हो सकता है ऐसा हो जिसमें आपको फॉर्मूला शीट की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर एक टीचर आपने सुना है कि फॉर्मूला शीट दे रहा है और दुनिया में रिवाज बना हुआ है फॉर्मूला शीट देने का, मैं भी जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी समझूंगा तो दे दूंगा फॉर्मूला शीट। बट मैंने जैसे बताया कि पेपर विल नॉट बी वेरी लॉन्ग, 60-65 मिनट का पेपर है यार। इसमें तुम्हें कितने 15 फॉर्मूले चाहिए होंगे, 15 फॉर्मूले मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम ये देखते रह जाओगे कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। या तो सवाल मैं ऐसा बनाऊंगा जिसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, या फिर जो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी हैसियत 1, 2, 3 दे दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन ये कहना मैं फॉर्मूला शीट दूंगा आपको, फॉर्मूला शीट का मतलब है लंबी चौड़ी फॉर्मूला शीट, सारे चैप्टर 7 की मैं फॉर्मूला शीट बना के दे दूंगा। अब तलाश करते रहोगे ये कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। भाई फॉर्मूला शीट प्रॉब्लम का हल नहीं है, प्रॉब्लम का हल ये है कि कौन सा फॉर्मूला किस जगह लगेगा। एंड for doing that you have to do some practice. मैं फोकस क्वेश्चन कर रहा हूँ, मजीद फोकस कर दूंगा हो सकता है। So you have to be able to apply formulas to solve problems. Concentrate that on more instead of expecting या शाहिद साहब बड़े नरम दिल आदमी है फॉर्मूला शीट दे देंगे। शाहिद साहब ने आज तक कभी फॉर्मूला शीट
हो सकता है रिकॉर्ड टूट जाए इस दफा, बट दैट विल नॉट बी अ फॉर्मूला शीट, ओनली अ फॉर्मूला दैट इज रिक्वायर्ड। अब वो कहीं मैं नीचे लिख दूंगा बॉटम ऑफ द पेज पे, अब तुम तलाश करते रहना कौन सा फॉर्मूला किस जगह लग रहा है, गलत जगह लगा दोगे फॉर्मूला, मैं क्या करूँगा। एनीवेज बहुत सी गलत चीजें रिकॉर्ड हो गई इस वक्त, अब हो गई हैं तो क्या करें, तो आई एम स्टॉपिंग।